एक्चुअली मैं हूँ हैदराबाद से, तो रास्ते में मुझे दूसरा वाटरफॉल भी मिल जाएगा। कहीं कलंगुट बीच से करीब 2 घंटे लगेंगे जर्नी, और दूसरा वाटरफॉल कवर कर लेंगे। सो कलंगुट बीच से मुझे दूधसागर वाटरफॉल्स का जो पास विलेज कोल्लम बोल के है, वहाँ पहुँचने में 2 घंटा लगा, और करीब 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जितना हो सके उतना जल्दी निकलिए कलंगुट से, ताकि यहाँ जल्दी पहुँच सके। तो यहाँ पर पर्सन जो है 400 रुपये चार्ज करते हैं। ये प्राइवेट गाड़ी में लेके जाएंगे, उनका गाड़ी में, अपना गाड़ी नया जहाँ देंगे दूधसागर वाटरफॉल्स तक। तो पर पर्सन 400 रुपये चार्ज करेंगे, और लाइफ जैकेट के लिए 30 रुपये, और थोड़ा आगे जाने के बाद उनका गाड़ी में जाने के बाद गेट फ़ी 50 रुपये, कैमरा के लिए 30 रुपीज़, सब कुल मिला के 48 रुपीज़ हो जाएगा पर पर्सन। तो यहाँ से जाने के लिए 40 मिनट्स लगेंगे दूसरा वाटरफॉल्स तक पहुँचने तक। तो वहाँ क्या पहुँचने के बाद आपको 1.5 आवर टाइम दिया जाएगा। तो फिर 1.5 आवर में आप अपने गाड़ी के पिकअप पॉइंट तक पहुँचना पड़ेगा। तो अगर लेट हुआ तो 200 रुपये फ़ाइन करेंगे, एक को नहीं, कुल मिला के जो कुछ भी जीप में है कुल मिला के सबको मिला के 200 रुपये फ़ाइन करेंगे अगर लेट हुआ तो, 1.5 आवर से ज़्यादा टाइम हुआ तो ये था डिटेल्स। आप एंजॉय करिए गाड़ी की जर्नी।
ये आ रहा दूसरा वाटरफॉल्स की स्टॉप। यहाँ पे पूरा गाड़ियाँ रोक देंगे। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। पैदल से करीब 3 से 5 मिनट लग जाएंगे दूसरा वाटरफॉल्स तक पहुँचने में। सुनो తీసేనా लेजा किती जे आहे आपली इथे ते वरता थांबते काय तो यह रहा दूसरा वाटरफॉल्स। यहाँ करीब 1 आवर से 1.5 आवर यहाँ रुकने के लिए टाइम देता है। इसके 1.5 आवर में यहाँ पे स्विमिंग करना है और वापस पहुँचना है वेके पिकअप पॉइंट पे। अगर इससे ज़्यादा समय यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो करीब 200 रुपये पर आवर पेनल्टी डालने वाले हैं वो लोग।